কিছু লোক আছে যাদের ভ্রমণ খুবই ভালো লাগে এবং ভ্রমণ যে ভালো লাগে না, ঘোরাফেরা যে ভালো লাগে না, এরকম লোক আসলে খুবই কম পাওয়া যাবে। কারণ আপনি দেখতেছেন যে কত লোক যে এখন টিকিট কাটার জন্য মানে ভিতরে প্রবেশ করবে। তা আমরা মূল ফটক আপনাদের একটু দেখাইতেছি। கூடு கட்டி நான் உன் கூட வாழுறேன் மாட்டி ஒட்டி உம்முன்னு தான் மறைச்சு பார்க்காதடி என் மனசுக்குள்ள நீ தான் கூசாதடி என் உள்ளுக்குள்ள உச்சி நரம்ப ஆட்டாதடி உன் ஆசைய தாழி আপনার আসলে এই জায়গায় আসতে হবে আমেরগড় নদী, বরিশালে কটকস্থল নামক স্থান, পশ্চিম দিকে কটকস্থল থেকে পশ্চিম দিকে আপনি যদি 2-1.5 কিলোমিটার ভিতরে প্রবেশ করেন তাহলে আসতে পারবেন এই মনোরম পরিবেশের একটি জায়গায় যেখানে শুধু লোক আর লোক। கலகலன்னு முன்னால சிரிக்கிறேன் பின்னால பறக்கிறேன் தன்னால பெண்ணே உன்னால கடுகடுன்னு சொல்லால இரட்டுற நல்லால முருகுற உள்ளால உந்தன் பம்பால ஆனது மாறுமா அழுகிற ஓரமா প্রবেশ মূল্য 20 টাকা থাকার পরও আমরা 50 টাকা করে হয়তো কাটতে হয়েছে, কারণ এখানে যখন ঈদ চলাকালীন সময় 50 টাকা করে, আর লোকেরও চাপটা মোটামুটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর লোক। তখন আমার থেকে 50 টাকা করে, হয়তো আমার থেকে না সবার থেকেই 50 টাকা করে টিকিট কাটা হয় এই জায়গায়। என் உள்ளுக்குள்ள உச்சி நரம்ப ஆட்டாதடி உன் ஆசைய தாளிட்டு போட்டாதடி என் பச்சை மண்ண பத்த வச்சு பார்க்காதடா உன் தூண்டல நீனு தான் மாட்டாதடா நீ பொட்டு வச்சு நேரா நடந்து வந்தாலே என் உள்ள தாண்டி தேரா ஆடுதுனாலே நீ சொக்க வச்ச தூணா எதிர நின்னாலே। প্রতিটা জায়গায় মেয়েদের উপরে পড়া ভিড় ছিল দেখার মতো, মানে এত পরিমাণ মেয়েরা আসছে যা আসলে আপনি কল্পনার বাইরে হবেন। ছেলে মেয়ে উভয় থাকলেও এখানে বেশিরভাগই মেয়েদের দেখা যাইতেছে, কারণ এত পরিমাণ যে মেয়েরা আসছিল, কারণ আপনি আন্দাজ করে হাঁটতে পারবেন না যে এত পরিমাণ মেয়েরা আসছিল এই পার্কে। என் வாழ்க்கைய கொல்லிதான் வச்சிடாத பின்னால ஓவரா சுத்திடாத சிங்கம் போல ஒத்தையா கத்திடாத என் உள்ளுக்குள்ள உச்சி நரம்ப ஆட்டாதடி உன் ஆசைய தாளிட்டு போட்டாதடி என் பச்சை மண்ண பத்த வச்சு பார்க்காதடா உன் தூண்டல நீனு தான் மாட்டாதடா বৃদ্ধ শিশু ছোট বড় প্রত্যেকটা লোকেরই একটা পরিবেশ, নমনীয় পরিবেশের ভিতরে তারা আসছে। আপনি যদি একটু দেখেন যে প্রতিটা শিশুরাই খেলাধুলা করতেছে এবং শিশুদের সাথে তার মায়েরা বাবারা প্রত্যেকজনেই আসছে, মানে দেখার মতো একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয় এই পার্কে। পার্কে শাড়ি পরে বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরে বিভিন্ন জায়গার থেকে বিভিন্ন মেয়ে ছেলে মেয়ে উঠতি বয়সের প্রত্যেকটা তরুণ তরুণী এসেছিল এই পার্কে। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো শিশুদের জন্য ছিল চক্রা খেলা, যেটাতে চক্রা উঠে শিশুরা ঘোরাফেরা করে। সে ছিল কেউ ফটো তুলছে, কেউ টিকটক করছে, মানে এরকম বিভিন্ন ধরনের খেলনা এখানে মূলত ছিল শিশুদের জন্য, এবং ছিল বিভিন্ন মানুষের এদিক ওদিক ঘোরাফেরারও দৃশ্য যদি একটু দেখাই আপনাদের।
পর্যন্তই শেষ। অন্য কোনো বিষয় নিয়ে, অন্য কোনো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। এই পর্যন্তই। অবশ্যই ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।